Warm welcome, students who has presented here. So please open your book and also page number, okay, and also your notebook. So today I'm going to share with you these exercises, and you have to note down these exercises in your notebook, okay. So we have already completed and also explained this chapter, and let share with you this exercises. So let's see the first question. What things are soaked before cooking in your house? Why? So answer is, so first of all I'm just going to मेक अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ओके। पहले सुन लीजिए ध्यान से सारे बच्चे केयरफुली। जो थिंग्स होती है, कौन कौन सी शौक होती है बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, आपके हाउस में कुकिंग से पहले, और क्यों। सो थिंग्स दैट आर सोक्ड बिफोर कुकिंग, थिंग्स ऐसी जो सोक होती है बिफोर कुकिंग, कुकिंग से पहले, जैसे हैं चना, मूंग एक्सेट्रा, ड्राई पी, राजमा एक्सेट्रा, पल्सेस बिफोर ग्राइंडिंग अप, ओके। पल्सेस हम क्या करते हैं, ग्राइंड अप करते हैं ना, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा बिफोर कुकिंग, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड आफ्टर सोकिंग दीज थिंग्स, इनके बाद जो होता है, सोकिंग के बाद दीज थिंग्स स्वेल अप हो जाते हैं एंड बिकम सॉफ्ट हो जाते हैं। ओनली देन दे बिकम ईटेबल, उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, खाने योग्य हो जाते हैं। इफ राइस, पल्स, if rice, pulse etc are soaked before cooking, they take less time in cooking। तो जब हम क्या करते हैं, इसमें वाटर पहले से रख देते हैं, अच्छे से जब सोक हो जाते हैं, तो ये कुकिंग के लिए वेरी इजी वे में जो है क्या होता है, हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है कुक करने के लिए, ठीक है। बहुत कम टाइम लेते हैं कुक करने के लिए। एंड दस फ्यूल कैन बी सेव्ड, इससे हमारा जो फ्यूल होता है, हमारा जो ईंधन होता है, वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग? व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, कौन कौन सी जो ऐसी थिंग्स होती हैं जो आफ्टर स्प्राउटिंग आप खाते हैं, ठीक है। हाउ आर दे स्प्राउटेड, और वो स्प्राउटेड क्यों, कैसे होते हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक, और कितना वो टाइम लेते हैं। सो जैसे हम क्या खाते हैं, चना खाते हैं, मूंग खाते हैं एक्सेट्रा, आफ्टर स्प्राउटिंग दैम, टू स्प्राउट दैम फर्स्ट दीज आर सोक्ड इन वाटर, तो क्या होते हैं, वाटर में सोख लेते हैं, रैप्ड अप कर लेते हैं द वेट क्लोथ एंड हैंग अप कर लेते हैं, सो दैट दे गेट प्रॉपर वाटर एंड एयर, जो उसका क्या हो जाता है, निकल जाता है। चना क्या करता है, टेक्स लेता है अबाउट 36 से लेकर 48 आवर्स इन स्प्राउटिंग के लिए, वाइल मूंग टेक्स, और मूंग जो होती है पल्स, वो कितना टाइम लेती है, 24 to 36 आवर्स, ओके, within like this. So now, has a doctor or someone you know ever told you to eat sprouts? Why? कभी आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि हैज़ अ डॉक्टर और समवन यू नो हैव एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट, कि वो स्प्राउट्स आपने खाते हुए कभी बताया किसी ने, और क्यों। तो येस, डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी, डॉक्टर ने एडवाइस किया मी टू ईट स्प्राउट्स, क्योंकि दीज आर वेरी न्यूट्रियस, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। Let's see the next one. Do this and find out. Do you remember that in class 4th, आपको याद है class 4th में you did an activity with seed, हमने एक एक्टिविटी की थी सीड से। Now try another one, अब हम करते हैं try another one। Take some चना and 3 bowls, हमें क्या लेना है, सम चना लेना है, और 3 क्या लेने हैं, बोल्स लेने हैं, ठीक है। अब पुट 5 चना इन द फर्स्ट बोल, और 5 चना कहाँ रखना है, फर्स्ट बोल में, एंड फिल इट अप करना है विद वाटर, उसमें क्या करना है, फिल करना है वाटर, ओके। एंड पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम, okay, so put a damp piece of cloth or some cotton wool in the second bowl, and now keep the same number of chanas in it. Make sure that the cotton wool or cloth remains wet. Put the same number of chanas in the third bowl, and do not put anything else in it. Cover all the 3 bowls. So listen, here given us some question. Are the seeds getting air? No. Bowl 2 yes, bowl 3 yes. Are the seeds getting water? What changes did you see? Have the seeds sprouted? So listen carefully. In the first answer, are the seeds getting air? So that is no, yes, yes. Are the seeds getting water? So yes, in the bowl 1 yes, also yes, and then in the bowl 3 no. What changes did you see? Changes क्या देखे आपने, चनाज have swelled up, फूल गए थे, चना
चनाज हैव स्प्राउटेड, वो स्प्राउटेड हो गए थे, एंड नो चेंज, बोल 3 में क्या हुआ, नो चेंज हुआ। हैव द सीड्स स्प्राउटेड, क्या उसमें जो है स्प्राउटेड हो गए थे, नो, फर्स्ट बोल में तो नहीं होगा, सेकंड में येस हो जाएगा, थर्ड में नो होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे कैसे दिए हैं आपको, अगर आप क्या करते, टेक सम चना 3 बोल में अगर हम लेते हैं, 5 चना अगर हमने एक फर्स्ट बोल में लिए और वाटर फिल कर दिया, ठीक है। सेकंड में देखो पुट अ डैम पीस ऑफ क्लोथ हमने लिया, कुछ कॉटन क्लोथ लिया, ठीक है, सेकंड बॉल में, ठीक है, और सेम नंबर के चनास उसमें भी रख दिए, ठीक है। एंड थर्ड वाले बोल में आपने क्या, डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट, उसमें कुछ नहीं रखा, एंड कवर ऑल द 3 बोल्स, और हमने उसको कवर कर दिया। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, सो लुक एट दिस एक्टिविटी एंड यू हैव टू फिल in your book. Let's see the next one. Tell and write in which bowl did the seeds sprout. कौन से बोल में जो है आपने देखा सीड स्प्राउट हुए, वो डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बोल, और आपने क्या डिफरेंस देखा, ओके, क्या इनके बीच में आपने क्या देखा, डिफरेंस देखा, एंड द अदर बोल्स में आपने क्या डिफरेंस देखा, एंड द अदर बोल्स। नाउ आंसर इज सीड्स स्प्राउटेड इन बोल 2 ओनली, किस में हुए थे, केवल 2 बोल में हुए थे सीड्स स्प्राउटेड, एंड इन बोल 2 में सीड्स गॉट बोथ एयर एंड वाटर लिया था, एंड दस दे आर स्प्राउटेड, वेयर एज इन बोल 1 एंड दीज गॉट ओनली वाटर बट नो एयर एंड दस दीज डिड नॉट स्प्राउट। इन बोल 3 में क्या हुआ था, दीज गॉट नो वाटर एंड नो एयर एंड दस डिड नॉट स्प्राउट, और बोल 3 में क्या हुए थे, वो स्प्राउट नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन द डैम क्लोथ, क्यों उन्होंने जो डैम क्लोथ में उसको टाई किया था, सो गोपाल्स मदर टाइड किया था चना इन अ डैम क्लोथ सो दैट दे गेट प्रॉपर वाटर एंड एयर, ताकि उनको जो है प्रॉपर क्या मिले, वाटर मिले और एयर मिले, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन यू स्पिल्ड द होल मसूर, अगर आप रखते हैं मसूर को पूरा फैला के, when you spill the whole मसूर, कब करते हैं मसूर को स्प्लिट, you get me मसूर दाल, okay, and but then you cannot sprout me, can you think why, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, it is because after splitting the sprouting capacity of मसूर is lost, उसकी जो मसूर की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8, लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग, अब आपको केयरफुली उसको देखना है और क्या करना है, ड्रॉ करना है। This is a kitchen activity. Students are directed to grown sprouts and check the changes. ये आपकी केवल आपकी क्या है, किचन एक्टिविटी, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है, बड़े कैसे कैसे हो रहे हैं, कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, फर्स्ट बोल आप लेना है आपको, देन आपको चना उसमें वो करना है, ठीक है, फिर आप खुद देखेंगे सेम थिंग्स एज यूजुअल विच हियर ऑलरेडी गिवन, यू हैव टू डू ऑल्सो सेम एक्टिविटी इन योर होम, राइट, एट योर होम। Next thing is here, plants your seeds. This is a project for you. Take a clay pot or a tin can with a wide mouth. Make a small hole at the bottom of the can. Fill your can with soil and put 4 or 5 seeds of the same kind in the soil and press them gently. And different groups can plant different kinds of seeds such as mustard like sarson, fenugreek like methi, sesame means til, or coriander means dhania. Okay, a name of the seeds you have to write here, name of the seed like mustard, sarson, right, and the date on which you planted them, that is January 1, 2008, and whatever you have to write it, like which date you will do this work, so you have to do you have to mention the date according to yourself, okay. The day you observe something coming out of the soil, start filling the table, okay. So you have to fill here like date 1, then height of the plant, and then number of leaves कितने हुए इसमें, any other changes हुए नहीं, ठीक है। जनवरी 9 जैसे ये सीक्वेंस में दिया वैसे आप डेट फिल करेंगे as for your uses, okay. And here is it given, this table, so you have to mention that this table in your notebook also, and also you have to see from your book completely, okay. Let's see the question number 10, how long did it take for the plant to come out from the soil, कि कितना टाइम लगता है soil से बाहर आने में plant को, so it took a week for the plant to come out from soil, कितना लगता है, a week लगता है ना, एक आपका हफ्ता लगता है, एक week लगता है plant से
जब वो सॉइल से बाहर आता है, राइट। एंड व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड डे, और क्या डिफरेंस होता है फर्स्ट एंड सेकंड डे प्लांट में, ठीक है। सो द डिफरेंस वाज ऑफ द हाफ सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है, ओनली कितना होता है, ओनली हाफ सेंटीमीटर। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, और कौन से डे में जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है हाइट वगैरह, ओके। सो वन डे 4 आई लाइक एग्जाम्पल फॉर ये 11th of January, so you have to fill according to yourself, okay, which date you will do this one, so you have to only mention that day, okay. And the height of the plant increase the more, don't write this date, okay. Question number 13, did new leaves come out the plant every day? Yes, okay. Was there any change in the stem of द प्लांट, कोई चेंज आया स्टेम में प्लांट के? येस, डे बाय डे इट गॉट थिकर, क्या होते रहते हैं, वो मोटे होते गए, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल, दैट इज अ सीसम, व्हाट वी कॉल तिल इन हिंदी। नेक्स्ट इज विच सीड्स टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉइल, दैट इज अ मस्टर्ड, किसने बहुत कम टाइम लिया लीस्ट डेज टू कम आउट द सॉइल, ठीक है। विच सीड्स टुक द लीस्ट डे टू कम आउट द सॉइल, that is mustard. On which day did the height of the plant increase the most? Consecutively on day 4, i.e. 11th of January, the height of the plant increased the most. Wait a minute, huh? Yes, so don't mention this date, you have to fill a date only yourself, okay. Which seed did not grow at all? Why? All seeds grow up, however if proper water and air had not been provided, they would not have grown up, okay. Wait a minute, here given which seeds took the least days to come out the soil, तो सॉइल से बाहर आने में कि कौन सा ऐसा वो है जिसको टाइम लगता है, दैट इज़ अ मस्टर्ड, लीस्ट डेज लगते हैं उसको, ठीक है। and here is it, wait a minute, yeah, which seeds did not grow at all? Why? All seeds grow up हो जाते हैं, however if proper water and air had not been provided, they would not have grown up, ठीक है। अगर एयर और वाटर नहीं मिलेगा तो प्रॉपर कैसे ग्रोन अप होंगे, राइट। डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप द टर्न येलो, एंड व्हाई डिड दिस हैपन? यस, इट हैपन्स बिकॉज दैट प्लांट मे नॉट हैव गॉट प्रॉपर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, उनको नहीं मिला होगा। व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर? दे वुड ड्राई अप और टर्न येलो, कैसे हो जाते हैं वो, येलो हो जाते हैं, right, straight from your heart. What is inside the seed? Inside the seed there are cotyledons and embryo, okay, cotyledons and embryo. How does a big plant grow from a tiny seed? So the seedling absorbs water and nutrients from the ground and grows into a big plant. Think and imagine what would happen if plants could walk. Draw a picture. अगर वो चलते, ठीक है. So if plants could walk, no one would be able to cut them. उनको कोई काट नहीं सकता. And they could grow more. बहुत ज़्यादा grow हो जाते as they would recollect themselves under the sunlight. Students are suggested to draw the walking plants drawing using the imagination. तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, आपको अपने imagination से करना है कि प्लांट जैसे चल रहे हैं. Do some plants grow without seed? So yes, some plants like potato, rose, banana, etc. grow without seed. ये बिना seed के क्या होते हैं, grow होते हैं, ठीक है. How many types of seeds can you collect? Where will you find them? And each of you should try to collect as many different types of seeds as you can. After that, put at all the seed collections together. Now observe these seeds carefully and their shapes, sizes, colors, textures, smooth or rough, like this. Textures means like, okay, and make a seed chart to put up in the class. You can start with the table like this. So you can see here name of the seed, rajma, color reddish brown, shape draw like this, and texture smooth. So look at your name of seed, जैसे राजमा हो गया, कलर क्या हो गया, रेडिश ब्राउन, फिर शेप हो गया, ड्रॉ करके दिखा दिया आपने, ओके. एंड देन टेक्सचर कैसा हो गया इसका, स्मूथ हो गया. मूंग का ग्रीन हो गया, सॉफ्ट हो गया. चना ब्राउन सॉफ्ट, पपाया ब्लैक एंड रफ. Let's see this one. Aniseed green soft, cumin brown soft, apple dark brown soft, mustard dark brown,
that is soft lady's finger, green soft muskmelon, white soft mango, white is yellow rough. We got these seeds from our house. हमें ये seeds कहाँ से मिले? अपने house से, farm and seed shop से, right? Did you keep any seed यानी कि सौंफ and cumin mean जीरा in your list? Yes, बिल्कुल. Which was the smallest seed and which was the biggest seed in your collection? So the smallest seed was a mustard and the largest seed was of mango. Okay, make list of this one. Seeds that are used spices in your, yes, cumin, mustard, etc. ओके ये हमारे क्या होते हैं? स्पाइसेस होते हैं जो हमारे घर में होते हैं, ठीक है ना. इनके क्या होते हैं? सीड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं. ओके, सीड्स ऑफ वेजिटेबल लेडीज फिंगर, सीड्स ऑफ फ्रूट्स मैंगो, एप्पल, पपाया. ओके, लाइट सीड्स चेक बाय ब्लोइंग देम लाइक क्यूमिन, जीरा, फेनल, सौंफ. ओके, सीड्स विच आर फ्लैट दैट इज अ मेलोन सीड, एप्पल सीड, पम्पकिन सीड. मेक मोर ग्रुप्स. हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड डिड यू मेक? सो सीड्स दैट आर एडिबल, seeds from which oil is extracted, seed which can float on water, seeds which can float in air, seed which can stick to our body. Do you know any game that you can play with seeds, discuss with your friends? So yes, some seeds have lot of tiny hooks which get attached to clothes or fur. Such seeds are very popular among children. Similarly, a type of flute is made from mango seed. This is a very important, okay. टाइप ऑफ फ्लूइड किससे बना होता है आपका? मैंगो सीड से, राइट. वॉन्डरिंग सीड्स. हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई? येस. व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया? दैट इज अ बुधिया के बाल. ओके, बुढ़िया के बाल, राइट, बुढ़िया के बाल. So look at your seed collection. Guess how many of those could have traveled by flying. Seeds of domestic madar pine seeds, cotton seeds, begonia seeds are spread by air. Did you get any new idea from these seeds? Yes, these seeds can be used, play many games and also for decorative purpose. So look at this picture given below and guess how the seeds travel the reach different places. में कैसे कैसे जाते हैं, देखो कैसे कैसे जो है एनिमल्स लेके. इन द फर्स्ट फिगर में क्या हो रहा है? द सीड इज स्प्रेडिंग बाय अ स्क्वायरल के थ्रू जो स्प्रेड हो रहा है. इन द सेकेंड में बाय अ बर्ड के थ्रू एंड इन द थर्ड में बाय वाटर के थ्रू, राइट. Some plants spread their seeds over long distances, and when the soybean pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sound? Yes, I have heard their sound. Think what would happen if seed did not spread and remained at one place only. So that is, if the seeds did not spread out, they would fall in the present bed itself, leading into struggle of water, minerals and sunlight, and as a result none of the plants would grow properly or survive. Next is, make a list of the different ways by which seeds are spread. Seeds are spread by birds and animals, humans, wind and water. What all was grown in India long ago were mangoes and bananas grown here. What came from other countries? Imagine food without potatoes or tomatoes. So जो टी है, मैंगो है, ऑरेंज है, रेड डिसमेथी, स्पिनक एक्सेट्रा, ये ग्रोन हुए इन इंडिया लॉन्ग अगो. एंड येस, जो मैंगोज है, बनानाज है, वर ग्रोन ऑल्सो देयर. टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिली, कैबेज, पी, कॉफ़ी बीन, भिंडी एक्सेट्रा केम फ्रॉम अदर कंट्रीज. सो अदर कंट्रीज से कौन कौन सी चीज़ें आई हैं? टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिली, कैबेज, पी, कॉफ़ी बीन, भिंडी, और भी चीज़ें हैं जो हमारी अदर कंट्री से हमें मिली हैं. इफ़ देयर हैड बीन नो चिलीज इन आवर फूड, अगर हमारे उसमें जो चिलीज नहीं होती, द फूड वुड हैव बीन टेस्टलेस. तो कैसा होता है? टेस्टलेस होता है, राइट. Wandering seeds. Reena has drawn this picture of the seed sprouted by her. Why do you think the seeds need for sprouting? And write in your own words. And how would Reena's seeds look if they did not get the things needed? So by drawing a picture. So answer is here given. Seeds need water and air for sprouting. If the seeds do not get water, there would be no change in them, right? And if they got water but not air, they would not sprout at all, though they would swell up.
How do seeds spread to far off places? Write in your own words. So seeds are spread by birds, animals, air and water, and birds and animals throw out the seeds after eating the fruit, and thus the seeds spread out. Similarly, some light seeds are spread by wind, some fruits are carried out by water, the seeds are spread out. Okay, so these all are questions. You have to mention it, you have to write down in your notebook, and some like table also you have to mention in your book also. Clear everyone? And also learn it previous chapters, okay, previous questions answers.